Defence Minister Rajnath Singh makes statements on border issues with China and also praises the valour and sacrifice of brave Indian soldiers, says that India has done counter-deployment to safeguard our interests. Prime Minister Narendra Modi outlines the vision of urbanization for better ease of living, says need to build cities with opportunities, prosperity and modern facilities for all. Inaugurates and lays the foundation stone of 7 urban infrastructure projects worth 541 crore rupees in Bihar via video conference. Cabinet approves establishment of new AIIMS at Darbhanga in Bihar. The Cabinet also approves Haryana Orbital Rail Corridor project from Palwal to Sonipat via Sona Manesar Karkhauda. Day 2 of the monsoon session of Parliament, Rajya Sabha passes the Aircraft Amendment Bill, and the bill provides for statutory backing to civil aviation regulatory authorities. The Health Ministry holds a press conference on COVID-19 situation in the country and says the number of tests daily have been increasing at a rapid pace, and that both the rapid antigen test and the RT-PCR test only in 4 states are having more than 50,000 active cases. And the nation keeps the battle going against COVID-19, over 79,000 recoveries in the last 24 hours, raising the recovery rate to 78.28%. More than 9,90,000 active cases in the country, and worldwide the COVID cases have crossed 2 crore 94 lakhs. A voice of billions of people, Doordarshan is celebrating the 61st Foundation Day today. The public service broadcaster has emerged as the most favoured channel for all generations with its diverse coverage, authentic news and popular entertainment serials. Namaskar and welcome to the news. My name is Mark Lynn. Let's begin with our top story. The Defence Minister Rajnath Singh today made a statement in the Lok Sabha on the standoff between India and China, the troops of the two countries along the line of actual control in eastern Ladakh. The Defence Minister said that peace and tranquility along the border have an impact on India-China relations, and he termed China's violent conduct along the LAC as a violation of all existing agreements. He assured that the Indian forces will forcefully counter all the Chinese aggression along the border, and this statement in fact assumes significance in the backdrop of demands made by the opposition for a debate on the issue. सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस इशू का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखना बाइलेटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनिएटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हैं। Well, he assured that Indian forces will forcefully counter all Chinese aggression along the border. यह सदन अच्छी तरह अवगत है कि चाइना भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना बताता है। Rajnath Singh said that Indian forces are determined to protect security and sovereignty of the country.
Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone of 7 projects related to urban infrastructure in Bihar via video conferencing. Out of these, 4 projects are related to water supply, 2 to sewage treatment and 1 to waterfront development. The total cost of these projects is 541 crore rupees. The implementation of these projects has been undertaken by BUDCO, and this is under the Urban Development and Housing Department of Bihar. The Union Minister Ravi Shankar Prasad and Bihar Chief Minister were present on the occasion. And in his address, Prime Minister Narendra Modi lauded the efforts of the state government headed by the Chief Minister Nitish Kumar. He talked about a host of issues, including girl education, representation to the deprived sections of society in local bodies, and development in general. बीते 1.5 दशक से नीतीश जी, सुशील जी और उनकी टीम समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मविश्वास को लौटाने का भरपूर प्रयास कर रही है। विशेष तौर पर जिस प्रकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई को पंचायत राज सहित स्थानीय निकाय में वंचित शोषित समाज के साथियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। And Prime Minister Narendra Modi also said that lakhs of families have been connected to water facilities in the urban areas of Bihar in the last 4 to 5 years under, I beg your pardon, under schemes of the Mission Amrut and the state government. मिशन अमृत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 सालों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। आने वाले वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां हर घर पाइप से पानी पहुंचने लगेगा। Prime Minister Narendra Modi also said that today it is necessary for cities to have modern facilities with the possibilities for people to have prosperity, respect, security and develop a strong society. आज आवश्यक है कि हमारे शहरों में संभावनाएं हो, समृद्धि हो, सम्मान हो, सुरक्षा हो, सशक्त समाज हो और आधुनिक सुविधाएं भी हो। यानी कि शहर ऐसे हो जहां सभी को, खासकर हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नई और असीम संभावनाएं मिले। शहर ऐसे हो जहां हर परिवार समृद्धि के साथ, सुख के साथ जीवन जी सके। The Prime Minister said that under the Namami Gange mission, construction work of more than 180 ghats is going on in the entire country, including in Bihar. Of these, 130 have been completed. गंगा जी के किनारे बसे गांव और शहर आस्था और आध्यात्म से जुड़े पर्यटन के प्रमुख केंद्र रहे। गंगा जी को निर्मल और अविरल बनाने का अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें पर्यटन के आधुनिक आयाम भी जुड़ते जा रहे हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, gave its approval to the Haryana Orbital Rail Corridor project from Palwal to Sonipat via Sona Manesar, Karkhauda, and the estimated completion cost of this project is 5,617 crore rupees. The project is likely to be completed in 5 years.
The districts of Palwal, Nu, Gurugram, Jhajjar and Sonipat districts in Haryana will be benefited from this rail line. And the cabinet approved the establishment of new All India Institute of Medical Sciences and AIIMS at Darbhanga in Bihar. Its cost will be 1,264 crore rupees. Parliament today passed a bill which seeks to improve India's aviation safety ratings and provide statutory status to regulatory institutions, including the Director General of Civil Aviation. The Aircraft Amendment Bill 2020 also provides for keeping of aircraft belonging to the country's armed forces outside the purview of the Aircraft Act of 1934. So this bill proposes to increase the fine amount for violations of new rules, the fine from 10 lakh rupees to 1 crore rupees. The bill was passed by a voice vote in the Rajya Sabha. It had already received approval in the Lok Sabha in March. In the Rajya Sabha, the Union Health Minister Dr. Harshvardhan informed the House about COVID-19 fatality and recovery rates. They stand at 1.67% and 77.65% respectively. He informed the House that India has been able to lift and to limit its cases and also the death per million. The cases are 3,320 cases per million and deaths 55 deaths per million, which is among the lowest in the world. A total of 45,62,414 confirmed cases and 76,271 deaths with a case fatality rate of 1.67% have been reported in India. As many as 35,42,663, that is about 77.65% cases have recovered. With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,320 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. India continues to report a high number of recoveries exceeding 70,000 per day. 79,292 recoveries were recorded in the last 24 hours, taking the cumulative total of recovered patients to 38,59,399. And with this, the recovery rate currently stands at 78.28%. India's three-pronged strategy of test, trace and treat is proving to be a success. The fatality rate stood at 1.64%, and the number of active COVID-19 cases in the country stands at 9,90,061, which is about 20.08% of the total cases reported so far. Addressing a press conference, the Secretary in the Ministry of Health Affairs, Rajesh Bhushan, said that India's COVID-19 mortality rate is one of the lowest in the world. The deaths per million population in India is the total number of deaths are 58, which is deaths per million, which is amongst the lowest in the world. एब्सोल्यूट नंबर देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी भारत विश्व में सबसे कम प्रति मिलियन पॉपुलेशन वाले देशों में है. हमारे यहाँ 3,500 केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं, जबकि अन्य देशों में ये 5,000 से लेकर ऑलमोस्ट 22,000 प्रति मिलियन तक हैं. उसी प्रकार अगर आप डेथ प्रति मिलियन देखें तो यहाँ भी भारत सबसे नीचे संख्या दिखा रहा है. हमारे यहाँ 58 मृत्यु प्रति मिलियन होती हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में 128 से लेकर लगभग 600 से कुछ अधिक मृत्यु प्रति मिलियन हो रही हैं. Besides, testing also has been ramped up in the country following a rise in the COVID-19 cases. लगातार हमने पाया है कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ी है. आप देखेंगे कि 7 जुलाई को हमारे 1 करोड़ टेस्ट थे देश भर में और हमें 27 दिन लगे 1 करोड़ टेस्ट और बढ़ाने में,
तो 1 करोड़ से 2 करोड़ टेस्ट तक पहुंचने में हमें 27 दिन लगे. वी टुक 27 days to add 1 crore tests, from 1 crore to 2 crores. However, we took only 10 days to jump from 4 crore tests to 5 crore tests. हमने बहुत तेज गति से न केवल अपनी RT-PCR की क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी संख्या को भी बढ़ाया है, ताकि राज्य सरकारें एक से अधिक स्रोतों से रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्राप्त कर सकें. 5 states, including Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Tamil Nadu, account for 60% of the total active cases in the country. देश के 5 राज्यों में 60% एक्टिव केसेस हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 29 से कुछ ज़्यादा प्रतिशत केस हैं, कर्नाटक में लगभग 10% हैं, आंध्र में 9% से कुछ ज़्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में 6.8% है और तमिलनाडु में 4.7% है. And as we said, the deaths per million population in the country is at 58, which is amongst the lowest in the world. Now, the Union Minister Smriti Irani presented the diet chart in the Lok Sabha today. So, the Union Minister said that for the first time, the government is making an effort in this regard. In a first, the diet chart for pregnant women and lactating mothers has been formulated by ICMR. मैं डाइट चार्ट्स फॉर प्रेग्नेंट विमेन को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी. मंत्रालय में एक समिति का गठन कर इसमें राष्ट्र के कुछ विशेषज्ञों को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, ICMR को सम्मिलित किया गया और उनके प्रयासों के बाद आज क्षेत्रवार गर्भवती महिलाओं के लिए डाइट चार्ट पहली बार इस सदन के इतिहास में मैं प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाई हूं. Well, Doordarshan is celebrating its 61st Foundation Day today. It was established as a public broadcaster on the 15th of September in 1959. Let's look back at its legacy. Starting from an experimental service on the 15th of September 1959, Doordarshan has become one of the largest broadcasting organizations in the world and has played a pivotal role in nation building. Even in this era of communication and digital revolution, it has set new standards of entertainment. Regular daily broadcasts began in 1965 as a part of All India Radio. In 1972, this service was extended to Mumbai and Amritsar, which is today available even in the remotest part of the country. My best wishes to all the viewers of Doordarshan as the DD family completes 61 years. I want to thank everyone for being connected with brand Doordarshan over the decades and giving us your love and appreciation. Please continue to watch all of our new channels like DD Retro, DD India, and the several state channels that we have launched in the last couple of years. Please continue to connect with us on social media, especially with our Archives YouTube channel, and continue to give us your feedback, and looking forward to another 60 years of Doordarshan in the decades to come. National broadcast began in 1982. In the same year, it started its color broadcasts too. Art and cultural related programs have been an integral part of Doordarshan. When it comes to the credibility of news, dissemination of public service information and providing wholesome entertainment, Doordarshan's contribution is truly unmatched. 61 साल की सेवा दूरदर्शन ने आज पूरी करी है. बहुत बड़ा योगदान रहा है देश निर्माण में दूरदर्शन का. हम सबकी लाइफ से दूरदर्शन हमेशा जुड़ा रहा है. पिछले 1 साल में भी कोविड के दौरान हमने देखा कि जितनी सकारात्मक भूमिका दूरदर्शन ने निभाई है सभी नागरिकों को जागरूक करने की, सावधान करने की, खतरों से कोविड के पूरे सावधानियों का पालन करने की. मेरे हिसाब से किसी भी और मीडियम को इतना सशक्त रोल नहीं रहा है जितना दूरदर्शन का रहा है. और 61वें फाउंडेशन दिवस पर मेरी दूरदर्शन को बहुत बहुत बधाई. From the days of Ramayana, Mahabharat, Hum Log, Bunyad, Malgudi Days, Udan, Chitrahar, etc., Doordarshan today broadcasts high-tech coverages of national and international events and impactful programs on health, education and empowerment.
It has popularized non-Hindi serials too. दूरदर्शन ने आज अपनी गौरवमयी यात्रा के 61 वर्ष पूर्व किए हैं। इस दौरान देश की जनता ने दूरदर्शन को भरपूर स्नेह दिया है और दूरदर्शन के कार्यक्रमों, दूरदर्शन के समाचार को बहुत पसंद किया है, क्योंकि दूरदर्शन ने पिछले 6 दशकों में अपने समाचार और कार्यक्रम दोनों में नैतिक स्तर को बनाए रखा है। मैं आश्वासन देता हूं कि आगे आने वाले समय में भी दूरदर्शन के जो दर्शक हैं वो पूरे देश में ही नहीं, जो कि विश्व भर में फैले हुए हैं, वे मनोरंजक कार्यक्रम और निष्पक्ष समाचार हमारी तरफ से पाते रहेंगे। Doordarshan has been a favorite of generations of viewers and continues to contribute towards enriching India's social fabric. Bureau Report, DD India. And with that, we conclude this bulletin. Thank you very much for being with us. Namaskar.